Good evening. Welcome to Women's Day month-long celebrations. Yoga sessions are always started with prayer. May I request Radhika madam to recite the prayer, please? Thank you, madam. Everyone, close your eyes gently. Keep your back straight. And as we inhale 3 times, and while exhaling, chant Omkar, and then a prayer. Om. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Gently cup your eyes and slowly open your eyes. Thank you. Thank you, Radhika madam, for the prayer. Everyone, I am Shubhda from Aarambh Yoga Institute. Good evening. A very warm welcome to all of you for this yoga session on the occasion of International Women's Day 2023. Women are competent, dynamic at work, versatile, successful, and above all caring and affectionate. They are the super glue that hold many pieces of life together. While maintaining work-life balance, women get stretched and stressed while they look after everyone around them. Who looks after them? Keeping this question in mind and special occasion of Women's Day 2023, Aarambh Yoga Institute is celebrating whole month of March as International Women's Day 2023 by organizing a series of yogic practices and knowledge sessions conducted by yoga sadhaks. To begin with, I would like to give some insights about Aarambh Yoga Institute. Aarambh Yoga Institute, Kandivali, Mumbai, is an ISO 9001 certified institute with an international standards recognition of Yoga Certification Board under Ministry of Ayush and is running as an educational wing of Aarambh Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. Aarambh Yoga Institute is a trusted yoga institute who work to enlighten the world, especially young aspirants with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession. We introduce them to the real essence of yoga and benefits of introducing applying yogic principles and practices to their lifestyle. It results in improved balance of an individual on multiple aspects of life, hence creating a better society. Now let me share the other major activities being conducted at Aarambh Yoga Institute. Regular yoga classes every day, early in the morning, and late afternoon on various days. Advanced yoga, power yoga, society yoga, corporate yoga, partner yoga, and pregnancy yoga class
under the guidance of a yoga expert and a doctor. Aarambh Yoga is also conducting professional certification courses like yoga teachers training courses and preparation courses for YCB, that is Yoga Certification Board from level 1 to level 4. We also conducted the coaching and guidance program towards UGC NET or JRF exam preparation. Let me share few words about the force behind Aarambh Yoga Institute Director Sushma Maurya Madam. She is a qualified professor awarded by University Grand Commission UGC NET India. Her educational qualifications are MA in Education, Diploma in Education, MA in Yogashastra, Postgraduate Diploma in Yogic Science, Foundation course in Yoga, Madhyama Yoga Shiksha Teacher Training course. She has been honored with Yogashri Award by Indian Olympian Federation and Patanjali College of Yoga and Research Center. Sushma Madam is certified yoga teacher for all four levels and a lead yoga examiner of Yoga Certification Board, which comes under Ministry of Ayush Government of India. That's not all. She is a karate champion holding black belt. Before starting the Aarambh Yoga Institute for imparting ancient knowledge of yoga for the benefits of our society, she has served to various celebrities and well known personalities of different walks of life. She has been working in an association with various renowned institutes, corporates, schools, NGOs, gymkhanas, clubs for more than 15 years. Sushma Madam takes Aarambh Yoga Institute as a medium to inspire and encourage young generation to consider yoga teaching as a mainstream profession. She aspires to take this holistic health resource to every home to make it our life's integral part. So let's begin our today's yoga session on dimensions of wellness. It's my privilege and honor to introduce Dr. Sonalee Durve Madam, who will be taking you through today's yoga session on dimensions of wellness. She has joined online from Thane in Maharashtra. Her educational qualifications are MD, DGO, and DFP from JJ Hospital in 1994. She is the owner and medical director of Omkar Maternity and Surgical Hospital, Port Bandar Road in Thane West. Since last 25 years, Dr. Sonali has worked as consultant, obstetrician and gynecologist in various hospitals like Purandara Hospital, Municipal Hospital, Kaushalya Foundation Trust Hospital, Curry Hospital, Jupiter Hospital and Horizon Hospital. She bagged first rank in MA Yogashastra from Kavi Kulguru Das, Sanskrit University, Nagpur. She has a diploma in yoga education and is NET qualified as well as Ayush Certified Yoga Teacher. And she has done diploma in yoga therapy and naturotherapy from YVN. She is also an ACT yoga teacher and a guest faculty for yoga at Mumbai University for NET exam. She is a guest speaker for yoga at Thane Obstetrician Gynec Society and a yoga teacher at Gantali Mitra Mandali, Thane. Dr. Sonali is also a member of Yoga Therapy Committee of Indian Yoga Association. Without any further ado, may I request Dr. Sonali Durve Madam to take over and guide you all on today's yoga session on dimensions of wellness. Happy Women's Day, happy learning, stay fit, stay safe. Over to Sonali Durve Madam. Thank you, Shubda, for the kind words. Am I made the host so that I can share the screen? Can somebody make me the Ma'am, you can share directly. Achha, I can share. Okay. Okay. Before we start, I have few things. One is कितने minute है मेरे पास और second is language. Hindi English mix. Is that good with everybody? ठीक है? Okay. और कितने minute है 40?
45, 30? Ma'am, you can take it up to, yeah. Wellness is such a huge topic, na? बोलती जाऊंगी तो. Anyway, Okay. Ma'am, can I request you to be little more, the voice is low, one loud. minute. Yeah. Yeah. Is this better? Yes. Okay, sure. So, today we're going to be learning about wellness, a little bit of it, the different dimensions of wellness. शुरू करने से पहले एक request है, all those who can keep a pencil and paper with you or a pen with you. We'll be doing एक task करेंगे हम अपनी wellness जांचेंगे कि हम कितने wellness में है. Okay, आज हम योगा टीचर सबको बताते हैं कि होलिस्टिक हीलिंग, ऑल राउंड हीलिंग, दैट इज व्हाट योगा एम्स, पर हम कितने उसमें करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है. तो आज जो भी आज ज्वाइन हुए हैं सब ये टास्क मेरे साथ करेंगे ताकि हम अपने आप को सुधार सके कि क्या लेवल पे हम काम पढ़ रहे हैं. जब भी हम वेलनेस कहते हैं हम नॉर्मली सुनते हैं हेल्थ. ओके, so health is something which is a state of well-being. Okay, and wellness मेरे हिसाब से is a state of being. Okay? मतलब आप exist होते हैं और आपको उस existence की you are aware of it. Okay, that existence, a good existence, that is what is wellness according to me. So अगर हम देखने जाए, it is just not physical health. मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है या मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो that is not wellness. Okay, wellness also includes कि मेरा अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, मेरे लाइफ के लिए कुछ एक पर्पस है. ओके, मुझे एक सोशली एक्टिव कम्युनिटी है, जैसे हमारा योगा ग्रुप रहता है वो, और आई एम हैप्पी. Okay, I feel good about what I'm doing. That is very important as wellness. Okay, and it should include all your aspects. मतलब आप घर में जब भी काम कर रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं या आप जॉब पे जा रहे हैं, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप वॉक को गए हैं, जो भी आप करते हैं उस सभी एंड्स में आपको अच्छा लगना चाहिए, जो ठीक लगना चाहिए या चंगा लगना चाहिए. दैट इज व्हाट इज वेलनेस. ओके, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हम वो नहीं करेंगे, हम अगर उसमें टाइम नहीं डालेंगे या उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो लाइफ फुलफिल जो हम बोलते हैं कि एक अच्छी लाइफ, हमने एंड ऑफ द लाइफ हम जब भी अपनी गिनती करेंगे या हम बोलते हैं ना हिसाब रखेंगे, तो हमें लगना नहीं चाहिए कि अरे ये मैं इस तरह से अच्छा कर सकती हूँ. तो उसके लिए हमें अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हम we cannot have a what you can say a healthy and a well life. Okay, मतलब good in all senses. Okay, holistic life, that what we call in yoga. अगर हम definition, absolute dictionary definition देखते जाएंगे तो they usually say it is not a, it's a quality or state of being in good health, especially if you have a goal. Okay, कोई तो goal होना चाहिए. As I said, it's a state of being healthy and very important. जैसे हम योगा में सुनते हैं ना, it is not treating diseases. Okay, wellness meaning it is to prevent the disease or prevent the illness and prolong the life. Okay, so basically modern medicine usually focuses on treating diseases. Prevention of course is a part, but most of the times we focus on treating diseases. But in wellness we are focusing mainly on preventing them. Prevention is a core of it. Okay, or prevention ke liye what we should do, most important thing which I feel. Okay, wellness can also be defined as healthiness, soundness, and at all levels. As I said, it makes a whole person, so it focuses on body, mind, soul, and the whole human being. And as I said, it should cover all your aspects of life. So what are the 8 dimensions of wellness? Okay, very important is the physical, then comes your intellectual or mental as we call it, then is your emotional, then is your spiritual, social, financial, environmental, and occupational. And what are they?
ओके, तो फिजिकल इज बेसिकली बॉडी ओरिएंटेड, यानी कि मैं सो रही हूँ, खाना खा रही हूँ, न्यूट्रिशन। इसके लिए हम क्या, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, आई विल गो टू दैट अगेन, कि मैंने जो पेपर बोला है हम कैसे करेंगे उसको। देन इज योर मेंटल और इंटेलेक्चुअल। ओके, उसमें क्या आता है कि हम जो पढ़ाई करते हैं या जो भी सीखते हैं उसको मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, मेरे स्किल्स को, मेरे नॉलेज को मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ, कुछ एबिलिटी, मतलब वहां से मैं कुछ योगा क्लास चला रही हूँ, या अगर मैं कुछ कुकिंग की रेसिपी पढ़ती हूँ तो वो स्किल यूज करके क्या मैं अच्छा खाना बना रही हूँ, कुछ अच्छी डिशेज बना रही हूँ, घर वालों को दे रही हूँ, खुद खा रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। देन इज योर इमोशनल। इमोशनल इज योर कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। हमारे जो इमोशंस है, गुस्सा या खुशी जो भी है, उस पर हमें कंट्रोल है क्या, और हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं उनके साथ हम ये इमोशनल गिव एंड टेक अच्छे से कर पा रहे क्या। देन कम्स योर सोशल। सोशल इज डेवलपिंग अ कनेक्शन, मतलब जो भी कम्युनिटी में है आप, आपके आजू बाजू के लोग, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, जहां भी आप काम करते हैं, वो आप कितने कनेक्टेड है। आजकल ऐसे हो गया कि हम मोबाइल पे कनेक्टेड बहुत हो गए, लेकिन किसी को उठा के फोन करना या बात करना, या कि चलो आज हम मिलके गेम खेलते हैं, या हम गप्पे मारने के लिए चाय पे चर्चा जैसे पहले होता था कि कट्टा पे मिलते हैं, चलो हम लोग रहते थे, तो इवन विदाउट फोन्स वी यूज्ड टू मीट ऑन टाइम, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। आज अगर आप देखने जाओगे बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल कनेक्शन सब रहते हैं पर अपने अपने फोन पे रहते हैं, तो दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड। ओके, very important. Okay, even all yoga teachers should understand this. Financial wellness is very important. Okay, आप बहुत अच्छे योगा टीचर है, लेकिन अगर आपको काफी लोगों तक पहुंचना है, अच्छे लोगों तक पहुंचना है, और आपको आपका काम अच्छी तरह से करना है, तो मनी होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हाउ विल यू कनेक्ट टू पीपल। ओके, क्योंकि आज अगर आप सोशल मीडिया थ्रू भी जाने लगोगे, या अगर हम ये जूम में है तो जूम की भी फी है, तो आपको वो अफोर्ड होनी चाहिए, मतलब अदरवाइज हाउ विल यू रीच आउट टू पीपल। ओके, तो फाइनेंशियल सिचुएशन हैज टू बी अंडरस्टूड, आपके फाइनेंसेस वो हमको समझना बहुत जरूरी है। देन स्पिरिचुअल, ऑफ कोर्स, connecting your body, mind, soul together, so understanding our purpose of life, our goal of life, our meaning of life. Okay, so some part of philosophy, which we also understand very well when we learn yoga philosophy. Then is your occupational. These two are also very important, occupational and environmental, in today's day. Okay, because जो new generation हम सुनते हैं, आप बहुत बार देखोगे कि lot of people will jump their jobs, या तो they will not be happy with the kind of work they are doing. Okay, so they should be happy with the kind of work they are doing. खुशी, जैसे हम, मतलब मुझे याद है कि मैं जो काम करती हूँ, पहले भी जो करती थी, मुझे काम करने में मजा आता है, तो आपको काम करने में मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे चलो अभी जॉब है, रोज उठ के जाना है, 9 से 5 या वॉटेवर 9 से 8 10 बजे तक करना है, फिर घर आना है, फिर घर आके बॉस को गाली देनी है कि बस क्या होता है, ये है वो है, आज मीटिंग में ऐसे हो गया, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग। या तो यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेस इन द वर्क इन द सेंस कि आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन यू आर नॉट गेटिंग दैट ड्यूज, आप सेटिस्फाइड नहीं है आपके वर्क एनवायरमेंट से, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली इज एनवायरमेंटल। अगर आपके आजू बाजू में एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, इन एनवायरमेंट आई ऑल्सो मीन द कंडीशंस अराउंड यू, plus like the support system around you, plus the environment in true sense, मतलब nature. Okay, आप जितना nature को protect करेंगे आज, it will give it back to you, and that is how you can achieve good wellness. Because अगर हम I always say that if you erode the nature, आप उसको use करते जाओगे, एक time आएगा जब भी आज ही हम देख रहे हैं कि गार्डन ग्रीनरी इतनी कम हो गई कि हमको भाग के कहीं जाना पड़ता है छुट्टी में ग्रीनरी एंजॉय करने के। हमारे घर के आजू बाजू गार्डन या जो है, मतलब एक प्लेजेंट जो एनवायरनमेंट है वो काफी कम हो गए। ओके, एंड ऑफ कोर्स वी आर एंडरिंग द चेंजेस ऑफ दिस एनवायरमेंटल चेंजेस,
जैसे कि अभी गर्मी में बारिश हो रही है ना, 2-3 दिन से बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही है. सो वी डोंट नो व्हेन इज द सीजन. आई थिंक विंटर नेवर केम. मीम्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि अभी तो विंटर हो गया स्किप, अभी समर भी स्किप हो गया, डायरेक्टली रेनी सीजन आ गया. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंस. In addition to this, what I feel is if you have to really have to achieve ये सब 8 dimensions अगर हमको wellness में cover करने हैं, तो most important part हमको जो देखना है, इसके लिए we all will need a guide or a guru. Okay, that guide or guru can be anybody. Okay, you have to choose your guru in different fields. For physical, it may be somebody, your yoga teacher, it may be your gym trainer. For mental, it could be your teacher, your parents. For emotional is your family. For social is your friends. Financial guru can be somebody who can guide you on that. कि कोई जो है जिसको finances समझ रहे हैं वो आपको समझाएगा. Spiritual guru is very important. So all 8 dimensions of your life will need a guru. Okay, so guru is very important, and believe me, आपको जब भी सही गुरु मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आता है, ऑटोमेटिकली यू विल प्रोग्रेस ऑन द डायमेंशन ऑफ दैट wellness. And as we improve our wellness or as we progress to wellness, it will increase our productivity. Of course, output हमारा बढ़ेगा. Healthcare cost कम हो जाएगा because then we will be physically, mentally, emotionally, at all fronts will be healthy. And financially also will be stable. Okay, now coming finally to that wellness test. You can score yourself. ये आप चाहिए तो लिख लीजिए. Score 1 is if you're not at all doing something at that end. Okay, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे उस end पे. 2 is okay, मैं कर रही हूँ पर कभी कभी कर रही हूँ. Score 3 is काफी हद तक कर रही हूँ पर ओके, एक 10% मेरा कम है अभी भी. एंड 4 स्कोर इज एब्सोल्युटली आई एम डूइंग इट दिस एट फ्रंट. इसके बाद हम उसका स्कोर आप जैसे जैसे देखोगे, फिर 8 डायमेंशंस है, आप गिनती करो. अगर आपका स्कोर 1 to 8 के बीच में आता है, यस, देन यू कैन ऑलवेज सी विच डायमेंशन यू नीड टू वर्क. ओके, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर ज्यादातर सब डायमेंशंस में कम आ रहा है, स्कोर 1, 1, 2, 2 आ रहा है, तो यस, यू नीड टू वर्क ऑन दैट डायमेंशन. अगर आपका स्कोर 3, 4 में आ रहा है तो ओके, दैट मीन्स दैट एंड इज गुड. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत बार, नॉट ओनली यू, इफ यू आस्क मी ऑल्सो, देयर विल बी ऑलवेज ऐसा कि मैं एक डायमेंशन में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ पर एक डायमेंशन में मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. जैसे इफ यू आस्क मी, आई एम वेरी मे बी गुड एट my physical, emotional dimensions, but my financial dimensions may not be very good. I'm not very good at finances. There are people like me, okay? मुझे अगर आज भी आप चेक लिखने बोलो या बैंक जाने बोलो, I'm not very good. I don't understand those concepts. Okay, it's not good. I have to, मुझे मालूम होना चाहिए because I have to be. या अगर आप पूछने जाओगे कि environment wise how conscious I am conscious, but am I giving back something? वेरी रेयरली. मेरे पास बस एक छोटा सा मेरा बालकनी का गार्डन है, दैट्स इट. बट मैं कितना पुट इन कर रही हूँ, मैं कभी प्लांटेशंस को जाती हूँ क्या? ओके, आई स्पेंड टाइम विद नेचर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ मच एम आई गोइंग ऑन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू ऑल, एवरीबडी विल मार्क फॉर देमसेल्व्स, ओके, एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू गिव दिस टेस्ट टू एनीबडी, इट इज फॉर योरसेल्फ. आप अपने लिए रखिए एंड कीप ऑन इन बिटवीन, आफ्टर मे बी 2 months 3 months फिर से आप उसको रिव्यू कीजिए एंड यू कैन प्रोग्रेस कि ओके, चलो मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ गया इसके बारे में. सो व्हेन यू टॉक फिजिकल वेलनेस, व्हाट आर वी, मतलब इसमें क्या देखना है हमको? ओके, तो आस्क योरसेल्फ, आपको ही पूछ लीजिए, आप कितना रेगुलरली एक्सरसाइज करती है, आप कितना हेल्दी खाती है, आप कितना सोती है, आर यू हैविंग एडिक्वेट स्लीप. We tell people, but there are times कि हम 11 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे योगा प्रैक्टिसेस के लिए उठ के we start doing our practices or our classes, and we ourselves are not focusing on our sleep. Healthy food, even my patients, I never say कि healthy food क्या है.
जब भी आप कुछ खाने का उठाते हैं और आपको एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मैं ये खाऊं या न खाऊं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट, समथिंग इज रॉन्ग. किसी को बोलना नहीं पड़ता है वड़ा पाव उठाने से पहले कि वड़ा पाव मत खाओ, बट यू नो इट्स टू योरसेल्फ. हमें अपनी जवाब देने हैं कि क्या करना है. ओके, एनी बैड हैबिट्स लाइक यू नो अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स कितने हैं, आप पानी कितना पी रहे हैं, एडिक्वेटली पानी पी रहे हैं क्या, एनुअल मेडिकल चेकअप आप रेगुलरली कर रहे हो क्या, you are feeling good but suddenly you go and then your bp is 140 100 160 100, you didn't even know. या कभी कभी हम सुनते हैं ना, अरे कल ही तो मैंने उसको देखा था, अरे कभी उसको हार्ट अटैक आ गया. So people are healthy, they look healthy, that doesn't mean that they are well. And most important, you should know your body and you should be comfortable with your body. अगर आप ही अपने आप को नहीं जानते हो तो it is very difficult. Okay, so grade yourself according to what you do. I mean, आप खुद को पूछिए, I'm exercising, मैं exercise कर रही हूँ, मैं हल्दी खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे habits कितने अच्छे हैं, and you grade yourself. Okay, and then at the end of the day आपके एक बार 8 dimensions के grade आ जाएंगे, तो आप जिस grades में अच्छे हैं, I don't think you need to work on that. तो grades आपके कम है, वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Then coming to intellectual or mental, as I said, इसमें most important क्या है, creativity. Okay, creativity can be in anything. Creativity need not be related to finance. Creativity यानी कि normally ना, हाँ, I forgot at that time. See, very important is that काफी बार हम जो ये wellness है ना, हम हमारे घर में जो है ना people या people around you, okay, you can learn from them. Like health, physical health जो है ना, वो बहुत बार अगर healthy mother है तो healthy baby हो जाता है. Okay, we say healthy mother is a healthy baby. Or if there is a the mother determines the health of the family. Okay, the head of the family, or rather the lady of the family determines the health of the family. Okay, so the mother is very important when you go to physical health. Similarly, when you go to your intellectual wellness, okay, mental wellness, काफी बार काफी चीजें हम हमारे पेरेंट्स से जेनेटिकली लेते हैं या काफी बार हम सीखते हैं. okay, even from your grandparents for that matter. काफी बार रीडिंग की हैबिट्स जो है, okay, या कुछ बनाने की हैबिट्स जो है, वो हम बहुत बार हमारे फैमिली से सीखते हैं. सो यू शुड चैलेंज योरसेल्फ कि कुछ ना कुछ पजल सॉल्विंग, एक आध लैंग्वेज सीखो, एक आध इंस्ट्रूमेंट सीखो. Okay, in addition to your academic success, this is very very important. This goes a long way in aging beautifully. Okay, हम जो अभी आजकल बहुत बार सुनते हैं कि ओल्ड एज में नो अल्जाइमर्स हो गया, अभी उनको फॉरगेटफुलनेस हो गया, उनको याद नहीं रहता है आजकल, which is becoming very very common today. So अगर आप पहले से रीडिंग, क्रिएटिविटी, कुछ भी, नीटिंग, क्रोशे, कुकिंग, किसमें भी, पेंटिंग, पुट इट, यू नो, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है. इवन कुकिंग फॉर दैट मैटर improves your concentration and focus and helps you to have a good mental wellness. Then comes emotional wellness. Okay, every day we have extra emojis adding ना, हमारे WhatsApp इसमें सब नए नए, या इंस्टा पे नए नए इमोजीज ऐड होते रहते हैं. ओके, बट डू वी एवर सिट बैक एंड सी वेयर एम आई टुडे? यू नो, दिस इज अ होमवर्क एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, यू नो, एंड एट द एंड ऑफ द डे, दिन की शुरुआत में और दिन के एंड में, just put yourself into one emoji, where I was and what I am at the end of the day. Very very important. Okay, that will make you aware. आपको एक अवेयरनेस बढ़ेगा कि मैं सुबह कैसे फील कर रहा था, शाम को क्या फील कर रहा था, पूरे दिन में मैंने क्या किया. ओके, तो आस्क योरसेल्फ कि मैं अपने फीलिंग्स कितने एक्सप्रेस कर पाती हूँ. कभी कभी आप गुस्सा है लेकिन सामने वाले को समझा ही नहीं, या आपको यू आर सैड एंड घर में किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप सैड है आज. So are you able to express your feelings?
with people. कोई एक तो होना चाहिए जिसके साथ आप बैठ के आपके फीलिंग्स शेयर कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज ना बहुत बार ऐसा होता है. आई नो सो मेनी ऑफ फैमिलीज जिसमें सडनली हम सुनते हैं कि नो वो घर से बच्चा भाग गया या किसी ने सुइसाइड कर दिया. द रीजन इज पीपल डोंट इवन नो कि अरे इसके अंदर क्या चल रहा है, जबकि साथ में घर पूरा भरा हुआ है, सब है, बाहर से सब कुछ कुछ दिख रहा है. सो दैट अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड you should have a control. आपके इमोशंस पे कंट्रोल. सी देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स. जब भी मैं कंट्रोल कह रही हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, बट एक्सप्रेस इन अ कंट्रोल वे. मतलब अगर आपको गुस्सा भी आता है तो इट शुड नॉट बी कि यू आर थ्रोइंग थिंग्स. एंगर इज नॉट लाइक दैट. एंगर हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर ऑल दिस, हाउ गुड you are aware about your strengths. आपके क्या strengths है, आप कितनी पॉजिटिव फील करती है खुद के बारे में, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना अच्छा है. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस. हम पूछेंगे कि चलो एक कोई है जिसके साथ मैं बैठ के बात कर सकती हूँ, मैं मेरे इमोशंस कितने अच्छे से. अगर यू नो यू कैन इवन शेयर दिस विथ योर फैमिली. आप आपके फैमिली के साथ भी शेयर करो. All of the members in the family can just sit and discuss this. So we know कि हर एक का wellness quotient कहाँ कम ज्यादा हो रहा है. Okay. Then comes social wellness. Social wellness is having a group. Okay. Maybe diverse people in it. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई maybe a worker. आप साथ में कितना मिलजुल के कुछ काम कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, आपके एरिया के लिए कुछ कर सकते हैं. आप कितना गुड मतलब अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ. एंड यू आर वेरी श्योर कि चलो मैंने एक फोन उठाया तो बस 2 बंदे तो खड़े हो जाएंगे मेरे साथ, कहीं मुझे अगर जाना है या कुछ मुझे अगर हो गया तो एटलीस्ट 2 लोग हैं जिनका मैं रेफरेंस दे सकता हूँ या मेरे मुझे दौड़ के आ जाएंगे के लिए. सो ask this yourself, how good, because otherwise we are socially connected with so many people, but there should be at least 2 to 4 people जो हमारे क्लोज नेटवर्क में है कि कभी भी उठ के रात के 2 बजे भी अगर आप उठ के फोन करते हैं तो they are there to help. So you should be able to reach out, and of course other way around also. आप कितने लोगों के हेल्प पे आते हैं, मतलब अगर आपके फ्लोर पे है कितने लोग आपको बुलाते हैं हेल्प के लिए, उठ के वो आपको फोन कर सकते हैं कि ओके मेरा ये काम है प्लीज कर दो. ओके, द वर्क नॉट एट द एंड ऑफ यू नो योर जॉब, बट रेगुलर वर्क में आपके कितने लोग हैं जो आपको ऐसे बुला सकते हैं या आप पे रिलाय हो सकते हैं. देन as I said, financial wellness. Okay, lot of things, lot of people, बहुत लोगों को लगता है कि हम योग में है तो हमको ये you know money is not important, but it is not like that. For survival everybody needs money in today's world. Of course I'm not saying कि you have to earn too much and save and give it, but at least you should have a budget कि बाबा हाँ ये मेरे एक्सपेंसेस है, ये मुझे अर्न करना है. हाउ एम आई गोइंग टू स्पेंड दिस, मैं कैसे वाइजली ये स्पेंड करूं, व्हाट आर द वेज इफ आई हैव टू अर्न मोर, मैं कैसे अर्न करूं. ऑफ कोर्स द गुड वेज टू अर्न इट. अगर मुझे नहीं समझता है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो आई शुड टेक अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स. सो यू हैव टू अर्न, you have to give, track that both, earning also and giving also. You should learn to invest, spend and enjoy. Somebody is, can everybody mute themselves? Somebody is unmuted. A lot of disturbance for us. I don't know who is it. Okay, can the host mute everybody except me? Fine. So that is also very important. Financially responsible, having financial goals and plans. See, like अगर हम सोचते हैं कि okay, मैं अभी घर से योगा पढ़ा सिखाती हूँ, I want to have a class, okay,
or whatever. So you should, to buy that place, you will need money. So for that, you have to have a project कि okay, मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ. अगर मैं ये नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं किसको ले सकती हूँ? Okay. So it is very important to be financially literate in today's world. So all of you will ask yourself today, कि am I doing this? मैं जितना करती हूँ उतना मुझे earn हो रहा है क्या? Am I using it properly? Am I earning it properly? And how am I investing it for growth? Then is spiritual. Okay. When we talk about spirituality, it's very important to understand that you should have certain values, principles, and beliefs. Okay. And you should be aware of them, aware of your values, your principles, belief, aware of others' values, principles, and beliefs also, and respect them. आपके जो प्रिंसिपल्स बिलीव्स है किसी और के कुछ और प्रिंसिपल्स बिलीव्स है तो आपको उनको भी रिस्पेक्ट करना है. Develop a relationship with self, yourself. Okay, the capital S wala. Be with a like-minded community. Like we have a small this Aarambh Yoga. Okay, so Aarambh Yoga ka ek group hai. So when we have these small get-togethers or trips or whatever, spiritual trip. So interact. So when you get with people, you will be having, आप डिस्कस करोगे. जैसे आज के प्लेटफॉर्म में हम काफी सारे, एक महीने से हम काफी सारे किसी किसी के थॉट्स सुन रहे, कुछ हम प्रैक्टिसेस देखते हैं. So then that will give you spiritual wellness. कि how I can improve my beliefs, values, how can I implement them, and how can I get a sense of purpose and meaning for life and achieve that purpose and meaning. मेरे लाइफ का मैं पर्पस कैसे ढूंढूं और उसको कैसे अचीव करूं. And get into activities and practices like meditation, prayers, spend time in solitude, silence, introspect, very important. Then is occupational wellness. Okay, very important. Do what you love and love what you do. It's very, very important. आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए और आप जो कर रहे हैं उसको खुशी से कीजिए. So a good work-life balance is very, very important. So when you are working in your occupation, आपको एक टीम वर्क बिल्ट अप करना है. आप ग्रोथ की इच्छा करनी चाहिए. You should have growth in your work. You should have teamwork. And you should be able to keep pace with what is happening. So आपको एक career goal रखना है, आपको कुछ opportunities के लिए work up करना है. You should be passionate about this. Like if you think I'm good at something, how I can improve it, how more, what I can learn more so that, I can implement it in my work. That is very important. Good work habits and good skills are very important in your work. So if you think that, okay, मैं आज ये सिखा रही हूँ, योगा सिखा रही हूँ, मुझे maybe, I want to increase more, I want to teach bar yoga, I want to teach yoga philosophy, I want to teach aerial yoga, then do a course regarding that and then, or get somebody to do that. So that is how you can improve in your occupation. And then finally is environmental wellness, which is being in nature, in a healthy environment, being eco-friendly, that is recycle, reuse, protecting the environment, very important. How you can contribute to prevent pollution, to reuse, recycle, and be aware of the environment and respect it. Okay. At least try and spend maybe 10 to 15 minutes every day in a garden, walking somewhere, okay, with greenery, or at least take one holiday which is little eco-friendly.
maybe a naturopathy retreat or a yoga ashram retreat where you are in nature, back to your roots sort of, and then experience that fragrance of the leaves, the feel of the leaves or the grass below you, the open expanse of sky. ये जो चीजें हैं ये आपको experience करनी है, and when you experience and become aware, then you will understand the importance. And जब ये आपको importance समझेगा, of course you will have respect and try and protect it. So to sum it up, in short, wellness involves all your aspects of life. काफी बार हमारा होता है कि हम एक पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ओके, लाइक फिजिकल, मेंटल, फिजिकल करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटल है, पढ़ाई कर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल है, जॉब कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल है कि हम कुछ नया सीख के कर रहे हैं. बट ऑफ कोर्स ऑन द अदर फ्रंट्स, सोशल, स्पिरिचुअल, we don't have time. Environmental, we don't have time then. So it is very important that you focus on all aspects of life, and all of them are equally important. And think about the specific ways that can enhance. Okay, I have not given you solutions, okay, because that is another topic. Okay, what are the ways that we can improve this wellness? But yes, if you even think today where I am lagging, then you can start working towards it. And then everybody will have his own way of doing that. Of course, हर एक का अपना एक तरीका है काम करने का. And if not, then of course you can always talk with your friends and family and think of ways to improve that dimension of wellness. So you have to focus on all the 8 dimensions: physical, intellectual, emotional, social, financial, spiritual, occupational, environmental. If one suffers, the other also suffers most of the times. Slowly, अगर एक में भी आपको कम ग्रेड है, धीरे धीरे दूसरे में भी प्रॉब्लम आने लगेगा. तो एक इम्प्रूव होगा, दूसरा भी इम्प्रूव होगा. अगर एक गड़बड़ होगा तो दूसरा भी गड़बड़ हो गया. So try to work on the ones which are low. So moment that improves, the others will also. And to be happy, healthy, it is important to identify your wellness, work towards making sure they are fulfilled. Okay, so please score yourself for today. Keep that paper with you. Look into that paper again and again. See your score, at which dimensions you are lagging. And if you work on all the 8 dimensions of wellness, we'll end with this quote: like a butterfly, you will undergo a great metamorphosis or change and be released from this cocoon. Embrace your wings and fly and soar high. Okay, thank you. That was in short about wellness. I hope everybody is, aware of it, but only thing we don't even give a thought. Okay, we think we are doing everything. But yes, if you really ask, आप अपने आप को यही सवाल पूछिए, how to go about this. And in fact, I will tell you, when I was making this PPT also, even I was thinking, okay, ये मैं करती हूँ क्या? नहीं, ये नहीं करती, वो मैं करती हूँ क्या? Oh, so there are so many things even I am lagging. Okay, so that is all from my end. Wishing you wellness in all dimensions of life, and hope to meet you sometime again. And hopefully all of you will work with a good score, and we'll all have good score in few years time. Okay. Okay, chalo. Thank you. Ma'am, I have a question, ma'am. It is little bit absurd, but related to this topic only. That- Ma'am, how can one कौन है ये? increase its, Can ma'am, you Pooja come on Varman? One We second. have you on the screen. First, yeah, पूछिए. Can I ask now? Yes. Ma'am, how can one can increase its emotional intelligence? EQ, emotion, Yeah. quotient, you mean? Yes, See, ma'am. basically, if you become aware of your emotions, first thing, okay,
देखो बहुत बार है ना, गुस्सा आने से पहले अगर आपको समझ रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, Yes, ma'am. तो आपका गुस्सा वही कम हो जाता है. ओके, सो स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि अभी नेक्स्ट 5 days या 1 week मैं गुस्सा नहीं करूंगी या किसी चीज को मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, ओवर अ पीरियड यू विल रियलाइज आप नहीं कर पाओगे वो. मतलब जैसे ना, आई टेल यू, आई हैपन टू डू दिस कि मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि आज 2 दिन ना कुछ भी कोई कुछ बोलेगा ना, मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगी उसको. ठीक है, मतलब मुझे समझता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बट मैं उसको बताऊंगी नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा. थोड़े दिन बाद ऐसे होता है ना कि आपको वो आदत हो जाती है. सो यू डेवलप योर EQ लाइक दैट ओनली. ओके, अनदर थिंग यू हैव टू डू इज, जब भी आपको समझता है ना कि आपको ये बुरा लगा है, डोंट इवन रिएक्ट. या कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बोलते हैं, फिर मुझे लगता है कि ये जवाब दूं, है ना, तो जवाब मत दो, कीप क्वाइट. एक दिन बाद जवाब दो, योर आंसर विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. यस, इट इज Yes. डिफिकल्ट. हाँ, आप 10 बार में को सोचेगी और 8 बार में नहीं करेंगी, 2 बार ही करेंगी. मुझे पता है Yes. सबका ऐसा होता है कि 2 बार भी हम दो, बट ठीक है ना, एटलीस्ट 20%. सो वो 2 का जो भी था, वो कन्वर्सेशन वहीं पे रह गया. वेरी Yes. इंपॉर्टेंट. Like somebody says something to me and I don't like it, okay, and am I supposed to answer it? Forget about that. इतना लंबा क्यों? आप दुकान जाते हो ना, दुकान में आप खड़े हो and the owner is not attending to it. You, बहुत बार होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है. The owner of the shop just doesn't attend to you and you get very irritated. ये मेरे से पीछे आए वाले को दिखा रहा है सब, मुझे नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, मेरा तो 2 मिनट का काम है, मेरा एक ही जेरोक्स था, कितना टाइम रुका रहा है. होता है ना ऐसे. And invariably we tend to say कि अरे कितना टाइम लगा रहे हो. The better thing is stand there, don't do anything. The second time you go, no, that person also will understand कि वो आप सिर्फ देखो, वो दे देगा आपको, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. No, you really don't have to do it. I just had this experience. I had to make a police verification. And the only thing I did after going there was saying कि मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ सबमिट करने हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है 10 दिन. Oh, yeah. I just said this. And of course it was for the Air Force. So basically, see, the police is, they don't have any governing, but उसको भी लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं तो गवर्नमेंट में देना है इनको आइडेंटिफिकेशन. तो जब ये सेकंड टाइम गई, उन्होंने एक दिन में मेरा काम किया, बट बिठा के. हाँ, मतलब it was a very different experience for me and in a police station. So it is that हम लोग कभी कभी pre determined notions में जाते हैं कि ये तो करेंगे ही नहीं. ऐसा, मैं तो सेकंड टाइम गई थी तो मैं सोच के गई थी आज भी तो वापस ही आना है, बट हो गया, एक दिन में हाथों हाथ उन्होंने काम किया मेरा. So it is, people change, we just have to not react. It's not easy, I'm not saying it's easy, but slowly your EQ develops to that level. You stop reacting and उससे गुस्सा बहुत कम हो जाता है और काम भी आसानी से हो जाता है. Like today's experience, I was thinking this session was 5 to 6, and then I realized at 3 o'clock that this session is 6 to 7. Frankly speaking, I don't know why I was thinking. though जबकि मैंने सुबह 2 बार देखा था ये session 6 to 7 है, and I had to go somewhere, so I had thought that I'll finish and go for the session after the session, but then after later on I changed the program, so that's why I came late. So normal मेरा जो पहले का nature है ना, या तो मैं वो जो मैं जहाँ गई थी वहां का कैंसिल कर देती. I would have said कि मैं नहीं आती क्योंकि मेरा ये 6 बजे का सेशन है. But over a period I have started reacting कि okay, let me क्या होगा देखा जाएगा, let me go. बात तो करके देखो कि मैं थोड़ा जल्दी आऊँ क्या, 4:30 बजे आ जाऊँ क्या. I was supposed to go at 6:30, so I called up that person and said 4:30 आ जाऊँ क्या. तो he said हाँ ठीक है, 4:45 तक आ जाइए मैडम. So I went at 4:45. I finished the work by 5:45 and I came. That's why I joined 5 minutes late. But this is how it works.
अगर मैं शायद सोचती कि नहीं जाने दो, क्यों इतना गड़बड़, मैंने उसको 6:30 का टाइम दिया है, अभी मैं क्यों करूं, तो शायद नहीं होता. So that's how, you only play with yourself. That's a way you can improve your EQ. Slowly, it Okay. takes time. It's not good. All of these dimensions take long time, including your physical. Though हम सोचते हैं physical is very easy. Every day getting up and doing exercise is not easy. मैंने 10,000 steps सोचे हैं रोज के, वो भी नहीं हो पाते मेरे. So yes, everything takes time, and that's the reason I said grade yourself and grade for yourself. आप अपने आप को मार्क्स दो और अपने लिए दो, किसी को मत दिखाओ. आप अपने मार्क्स दो, अपने आप को मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, कैसे पढ़ाई करने हैं, सोचो. Okay. Okay. Oh, I Thank didn't you. know we were supposed to take questions on this front. Thank you. I was going to ask Vishnu ji के questions है क्या? Okay. No, but that's मैम एक्चुअली कभी कभी एक्चुअली विद द एज ऐसे हो जाता है कि ये सिचुएशन में हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, तो जो है वो उसे एक्सेप्ट कर दो और कुछ रिएक्ट मत करो. वो विद द एज भी शायद हो सकता है, और मतलब वो गुस्सा कम हो जाता है. एटलीस्ट मेरे साथ तो पता नहीं. but I mean, see, there are two ends to it. एज के साथ आप रिएक्ट कम कर सकते हो, लेकिन एज, जब एज कम रहता है ना, हम सोचते भी कम है ना. जैसे आज मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो मुझे सोचना पड़ता है कि अरे ट्रैफिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. पहले जब भी मैं गाड़ी चलाती थी एट 36, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कितने सिग्नल मिलने वाले हैं, कितना ट्रैफिक मिलने वाला है. बस मुझे 20 मिनट में पहुंचना है. आज जब भी मैं वहां से आई तो मुझे लग रहा था अरे अभी ये भी सिग्नल मिलेगा, 2 सिग्नल है, 3 सिग्नल है, ये ट्रैफिक दिख रहा है, ये ड्राइवर ने 3rd लेन में क्यों रखा है, 1st लेन में क्यों नहीं रखा है. 1st लेन से फटाफट जाता है ना, बट यही उल्टा था ना. So see, so age has nothing to do, मुझे ऐसा लगता है कि age has nothing to do. It is you are how you react and how you think about it. Maybe the thinking pattern has changed, but if you stop thinking, either ways it's good, na. See, maximum risk taking you take in younger age group because you don't think. And एक एज के बाद हम बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं. And frankly speaking, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव ही सोचते हैं. So that's why they say कि learning is very easy, but it's nothing to do with that again. I will tell you at a certain age, I don't know, Vishnu ji, we can continue na, 7 baj gaye. Yes, ma'am. We can take another 5-10 minutes. हाँ, okay. So because see, till a certain age, अगर आपने ठान लिया ना, आप कर सकते हो. I have learned driving at 35. I have learned swimming at 40. But today, if you tell me to do something more which I don't want to, I will not do. I wanted to do, that's why I learned it. So that's why I said this, that is the reason I said this task is for yourself. You have to understand and you have to. जब भी आपको करने, मतलब मुझे इतना बुरा लगा जब भी मैंने 40 में स्विंग लिया, क्योंकि मेरी बेटी जब भी 5 साल की थी, that was some 20 years back. I used to take her for swimming at her, 27, 28 में, और मैं 25 मिनट 30 मिनट वहां साथ में बैठती थी ना उसके साथ, मैं भी तो साथ में सीख सकती थी. I didn't do it at that time. I mean, so stupid of me, ऐसा मुझे लगा. But then when I learned at 40, believe me, it was not easy. Because I used to go 5 to 6 because that's a time which I have. And 5 to 6 is all those kindergarten, junior KG, senior KG वाले 5 से 6 आते हैं. Because 6:30 के बाद is for adults. And I didn't know anything in swimming, so I had to learn. So, I had those small ducklings along with me. And it's very funny because I'm a gynecologist. Half of them are born with me. So all their mothers know me. So the only good part was, till I'm in water, nobody recognizes me. But the moment I'm out of water, people recognize me. So, it's like, but I had decided because I was traveling to Australia and I said, no, I'm not going to sit on the beach with everybody's clothes. मैं सबके कपड़े नहीं संभालूंगी क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब सी स्विमिंग है, तो पानी में ही नहीं जाऊंगी, डर लगता है इसके. सो इट्स योर माइंडसेट. इवन साइकिल नहीं चलाती थी, लेकिन आई लर्न स्कूटर बिकॉज अदरवाइज आई हैड टू वेक अप माय हस्बैंड इन द नाइट टू ड्रॉप मी टू द हॉस्पिटल एवरी टाइम. सो यू हैव टू पुश योरसेल्फ. You have to push yourself. There is no option to it. That's what I said.
You have to make your goals and you have to work towards it. There is no option to it. Like yoga just happened to us ना. मैं तो ऐसा कुछ सोचे नहीं थी कि मैं योगा सीखूंगी, फिर मैं योगा टीचर बनूंगी और मैं एमए करूंगी या मैं नेट का क्लासेस में सिखाऊंगी आप मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं था. It was just for myself. अच्छा लग रहा है, चलो करके देखते हैं. ठीक है. So you have to. I didn't know anything in the computer for that matter. A lot of things, even today I pick up the phone and call Sushma and ask her, oh, Babri, ye nahi chal raha hai, kya karne ka, wo nahi chal raha hai, kya karne ka. I do that. So you learn making a PPT. I learned it. So everything you will learn. So you have to push yourself. There is no option, but you have to look into that. Ki, okay, कि मैं क्या कहाँ से कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ, and take help. That's why I said you have to have a guru. There is no option to it. There is no option to it. Guru is not exactly कि पैर छुओ. Guru is somebody who guides you. Like making a PPT, I learned it from my daughter. COVID times कि कैसा बनने का, ये क्या करने का. I mean, some of my cooking guide is or guru is my YouTube. She said YouTube पे देखो मम्मी अच्छा आते हैं. Okay, I learned it. So that is also your guru, na? So guru can be anything, which teaches you something and teaches you good, I think. So, okay. Any more questions with Vishnuji's permission? Yes, please, ma'am. We have, since we have started 5 minutes late, we can have. No worries, no worries. Ma'am, I just want to share what you mentioned about a reaction. No, when Sushma ma'am told me, will you take something? So, I was just wondering, what am I going to, talk? Because itni baar women हो गया रहेगा आपका. तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ अलग से बात करके देखते हैं. So, I just thought about it. These are the things, and of course, in fact, there's a good question here also for this, but I didn't want to put it because बहुत हो जाता आप लोग के लिए. I mean, we had a very short time of talking, but so my whole idea of doing this was just to put it across that ask yourself. That's it. पूछो अपने आप को कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मैं क्या कर रही हूँ, और उसके लिए मैं वही सही जा रही हूँ क्या. So अगर आप सही जा रहे हैं तो everything will happen sequentially. You can't jump steps. You can't, like in PYS session tatpramayo. So it has to happen in that shan. छोटे-छोटे क्षण लेके ही पूरा समय बनेगा. तो वो क्षण आपको गुजारने ही है. जब तक आप वहां तक नहीं जाओगे वो नहीं होता है, होगा भी नहीं. So give it time. Okay. Monali ji has a nice screensaver. Trust yourself and love yourself. Yes, that's nice. Okay, I'm seeing very familiar faces. Smita ji, nice. Thank you, ma'am. This session was very informative. Thank you. Thank you, ma'am. For I think I should cut down that introduction which I've given to Sushma. It's too big, no? That was required, ma'am. That was required. हो जाती है वो इतनी सारा क्यों पड़ेगा. वो मैंने कभी दिया था, उसने कभी मांगा था तो भेजा था वो. Okay, nice, and meet you again. I think कोई ना कोई session में मिलते रहेंगे. Sure. Thank you very much. Thank you for that wonderful session, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, it is really interesting. Thank you, ma'am. Yes. Okay. Bye. I don't know who is the host.